आज शिवप्रसाद शिरोडकर हे एक शिरोडेचे युवा नेतृत्व तांचो आज काँग्रेस प्रवेश सोहळा आणि ह्या सोहळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे AICCचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, त्याचबरोबर को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर, गोय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश तोडणकर, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट MK शेख, शिरोडेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट स्नेलो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शशांक मंगलदास, त्याचबरोबर युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित आणि शिवप्रसाद शिरोडकर जे आज रिसर प्रवेश करतले। या सोहळ्याक हांव तुमचे सगळे पत्रकार बंधूचे स्वागत करता। शिवप्रसाद शिरोडकर हो एक सामाजिक मळार शिरोड्या मतदार संघात काम करपी एक युवक आसा आणि ताजी आज जरी तो रिसर काँग्रेस पक्षात प्रवेश करता म्हणून ताजी आयडियोलॉजी ही जन्मजात काँग्रेस पक्षाची आसा। ताचे वडील हे काँग्रेस पक्षाचे 1977 काँग्रेसचे उमेदवार जावन आशिल्ले आणि तेन्नाच्यान तांचे नाते काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा। सामाजीक मळार ताणें खूब काम केल्लें आसा। ताचे कार्यालय शिरोड्या मतदारसंघात चालू आसा। जर वेगळे वेगळे सामाजीक उपक्रम तो आपल्या कार्यालयांतल्यान करता। समाज उपयोगी वेगळ्यो वेगळ्यो सुविधा तो आज लोकां पर्यंत पावयता आणि खास करून एक हायलायटेड अशी सर्वीस म्हणटा ती ॲम्ब्युलन्स सर्वीस, जो शिरोड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या नागरिकांक आरोग्य सेवा तो दिता, वेगळ्यो वेगळ्यो बाकीच्योय सुविधा दिता आणि त्याच बरोबर ताची खास एप्रिल मे म्हयन्यात ताणें वॉटर टँकर चालू केल्ली आणि तातूंतल्यान अशें दिसून येता की खंय तरी शिरोड्या मतदारसंघ हो विकासा पासून वंचित उरिल्लो आसा। BJPचे डबल इंजिन सरकार म्हणटात की हर घर जल, म्हणून शिरोड्या मतदारसंघात उदकाची सुद्धा खूप इश्यूज आसा आणि ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न शिवप्रसाद शिरोडकरान घेतिल्लो। तर अशें सामाजीक मळार काम करपी शिवप्रसाद शिरोडकराक की दिसलें की आपूण जर काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो आणि काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी जर आपण फुडें घेवन गेलो जाल्यार आपल्या समाजकार्याक बरी जोड मेळटली आणि त्याने आमचे कडेन इच्छा प्रकट केली की आपल्या काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून काँग्रेस पक्ष स्थानिक मळाचेर ग्रासरूट लेवलाचेर बळकट करपाक जाय। शिरोड्या मतदारसंघ काँग्रेसीची आयडियोलॉजी घेवन काँग्रेसीची एक प्रेरणा घेवन आपल्याक काम करपाची इच्छा आसा। ती इच्छेनुसार आज तो ह्या पक्षात प्रवेश करता। तर या सोहळ्याक जे आमच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ले श्री माणिकराव ठाकरेजी त्यांचे हांव ह्या सोहळ्याक स्वागत करता। डॉक्टर अंजली निंबाळकर यांचे स्वागत करता। त्याचबरोबर आज आमच्या मदीं आयिल्ल्या आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन श्री युरी आलेमाव जे आयिल्ले आसा, युरी आलेमावाचें स्वागत आणि हे सगळ्या मानेस्तांचे स्वागत करता आणि मागता की मागता की आमचे जे शिरोडेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट स्नेलो गाशियस आणि तांकां येवकार दिवचो आणि जे रिसर जो त्यांचा प्रवेश जाता ते त्यांचे मेंबरशीप फॉर्म आणि तांकां हँडओव्हर करचे। ब्लॉक प्रेसिडेंट स्नेलो येवकाराचे ब्लॉक करते। आज आमच्या मुखार आसा AICC डेस्क इंचार्ज सर माणिकराव ठाकरेजी, आमचो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सर गिरीश तोडणकरजी, आमची मॅडम अंजली मुखर्जी आणि आमचे सगळे लिडर थंयसर जाले आणि म्हाका तुमी म्हाज्या भावानूय मेळटा। आज एक शिरोडेचे आमचे हॉस्टेलच्या लोकांक एक उमेदीची गोष्ट की आज आमचो एक सोशल वर्कर
ती शिवप्रसाद शिरोडकर हे काँग्रेस पार्टीक जॉईन आसा म्हणून आयज तुमकां सांगपाची एक गोश्ट म्हणल्यार 2017 आमी लास्ट शिरोडे पक्षान ती काँग्रेसचो झेंडो वयर काडलेलो ते फाटल्यान 2 इलेक्शन जाली आयज पर्यंत आमी काँग्रेस पार्टी खूब फाटल्या पडली की आमी काँग्रेस लिडर दिवूं ना पक्षांनी आयज आमी हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट नात्यान आनी आयज शिवप्रसाद आमकां आनीक सपोर्ट मेळ्ळा पण आमी दोनी ठाकरे जालाक आनी आमचे पीसीसी प्रेसिडेंट जालाक आमी आतां एश्युरन्स दिता की दोनी मेळोन एक शिरोडे 2026-27 पसून शिरोडेचो झेंडो हे कॉन्स्टिट्युएन्सी परत वयर काडटली म्हणून हे तुमकां आनी नेक्स्ट दुसरें म्हणटाले आमच्या ब्लॉका थ्रू कमिटी आमी शिवप्रसाद शिरोडकराक काँग्रेस पार्टीक एंट्री दिता थँक्यू हांव विनंती करता आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हाणें पुष्पगुच्छ दिवन शिवप्रसाद शिरोडकरांचे तेका मोदी आहे स्वागत पुढे घे, पुढे घे, पुढे घे. तशेंच श्री माणिकराव ठाकरेजी आणि एलओपी जुरी आलेमाव Yes. Yes, full. हांव मागता आमचे एलओपी श्री युरी आलेमाव हाणें आपलें उलोवप करचें आशिल्ले आमचे गोंयचे डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजी अंजली निंबळकरजी आमचे प्रेसिडेंट जीपीसीसीचे गिरीश बाब तशेंच हाचेर आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे बाब एम के शेख अजित बाब शिवप्रसाद शिरोडकर आज खूब खुशालकाय भोगता कित्याक शिरोडा मतदारसंघात म्हाका दिसता सदांच काँग्रेसीचो झेंडा आसतालो आनीक गोंयांत जरी तर चोयल्यार एक एंटी इनकम्बन्सी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या विरोध गोंयभर ही एंटी इनकम्बन्सी आसा आनीक आमी जरी तर चोयल्यार शिरोडा ह्या मतदारसंघात हायस्ट एंटी इनकम्बन्सी आसा आनीक जे बाब राजेशान सांगिल्ले भाशेन आज जेन्ना शिवप्रसाद शिरोडकर एक युवक भुरगो मुखार सरला आनीक सोशल वर्क करता दुसरे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब स्नेलोय आसा काँग्रेस पक्षाचे काम मुखार व्हरपाक काँग्रेस पक्षाचे जे एक इतिहास आसा हाचो इतिहास आमच्या युवकां मदें व्हरपाक शिरोडा मतदारसंघात खास करून इतले आमदार इतले वर्सां जाले आसा पूण उदकाचे प्रश्न रस्त्याचे प्रश्न बारीक बारीक प्रश्न अजून त्या मतदारसंघात पुराय करपाक आसा मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचे दक्षिण गोंयांत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना खूब काँग्रेस पक्षाचो मोग आमकां फावो जालोलो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आज ह्या बीजेपी सरकारा विरुद्ध काँग्रेसूच एक पक्ष आसा ह्या पक्षान आज आमच्या गोंयचे पासत जायत कितें केलें आनीक म्हाका खात्री आसा की जेन्ना आमची गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपाक जाय जेन्ना इतले व्हडले डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट जाता ट्रायबला विरुद्ध जेन्ना इश्यू जाता आज भंडारी समाजाच्या विरुद्ध आज हो सरकार जेन्ना ही पॉलिसी मुखार व्हरपाक सोदता ह्या सरकाराक पडोंक ना पूण म्हाका जेन्ना आज आमी आनीकूय आमचे एक जॉयनिंग आसा मुर्मुगांवच्या वाठारांनी कुट्टाळे थिंगाय मारियानोय आज जॉईन जाता वयता थिंगा काँग्रेस पक्षाचे काम आनी काँग्रेस पक्षाचो झेंडो मुखार व्हरपाक युवकां मध्ये एक म्हाका दिसता लोकांनी एक डिसायड केलेले आसा की एक 27 काँग्रेसाचे आमदार निवडून हाडपाक त्याच पद्दतीन आज बाब शिरोडकराक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनीक रावता की आमी आमचे भितर युनिटी दवरून
आम्ही सगळ्यांनी आमचं लक्ष असपाक जाय की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी घरा धाडपाक आणि तुजोय हातभार आसतलो म्हणून समजून घेता. देव बरें. आता मागता की आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी हाणें संबोधीत करचे. आज शिरोडा मतदारसंघाचे खातीर एक बरी गोष्ट जाता. आमचो तरुण यंग बाब शिवप्रसाद वसंत शिरोडकर धाडसी आसा, डायनॅमीक आसा. तो आयज रितसर काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा आनी ह्या वेळार हजर आशिल्ले आमचे गोंयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, सहप्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे कॅशिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे ह्या वाठाराचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब राजेश, युथाचे प्रेसिडेंट बाब अर्चित, आमचे स्पोक्सपर्सन बाब सावयो गुतिनो, बाब समील वळवयकर, आमचो दुसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक, बाब शशांक नार्वेकर, बाब ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आमचो जाणें आतां रितसर प्रवेश केल्लो आसा. आमचो PCCचो मेंबर तुमचो बाब हेमंत सावंत. आयज खुबशे शिरोड्या मतदारसंघाचे आमचे खूब जुने आमचे लिडर्स पळोवपाक मेळ्ळे. बाब शिवप्रसाद हांचो वडील बाब वसंत शिरोडकर हो डाय हार्ड काँग्रेसमॅन, PCC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी म्हणूनय काम केला. काँग्रेसच्या वतीन तो इलेक्शनय लढला हाचे पयलीं. आनीक आमी तेंचे वय आसलें जाल्यार सुद्दां म्हाज्यान तेजी एक बरी मैत्री आशिल्ली. शिगमोत्सव समिती बाकीचे मडगांवचे सगळे राजकारण, मडगांवचे चडशे स्थायीक आसा ते चडशे शिरोडा आनी बरयेचे, आनी ताजे कारणान म्हाज्या आनीक बाब शिवप्रसादाचे आनी वसंत बाबाची घरकान्नूय आयज हांगा आसा, जेणे वसंत बाबाक काँग्रेसींत रावन काम करपाक खूब प्रोत्साहन दिल्लें आशिल्लें. बाब शिवप्रसाद हाणें जवळ जवळ 1 वर्स पयलीं म्हाजे कडेन संपर्क केल्लो आनी ताणें इच्छा दाखयली की आपूण आपल्याले जंय डॅडी काम करता थंय आपल्याक काम करपाची इच्छा आसा. आनी जो आमचो मूळ गांव शिरोडा मतदारसंघ आनीक त्या वेळार ऑफकोर्स अध्यक्ष हांव नाशिल्लो, पूण आमी जे कोणाक पार्टी आसा ताका आमी प्रोत्साहन दिवन काम करपाक लायताले. आनी त्या प्रमाणे हांवें शिवप्रसादाक त्या टायमार सांगलें, तूं अवश्य तुगे पयलीं काम कर आनी तूं जेन्ना पळय ब्लॉक सारको घट करतलो ताचे साथूय तुका मेळटले. सो म्हाका बरें दिसता आयज की ताणें 1 वर्सा भितर आयज आमच्या स्नेहलो ब्लॉक प्रेसिडेंटाक आनीक आमचो आदलो ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रुनो भायर आहा ते सगळे ताणें एकठांय केले. एक नवी एनर्जी शिरोडा मतदारसंघाक घातली. आमचो जेन्ना त्या टायमाचो आमदार जो पयलीं ताका प्रदेशाध्यक्ष केल्लो सुभाष शिरोडकर, ताणें येदोळी पदां सुद्दां त्या करून आपली प्रॉपर्टी सेव करपाक BJPन जे एअरपोर्टार थंय सांगून गेल्ले दोगूय तो आनी सोपटे त्यामुळे बिझनेस ट्रिपीर दिल्ली वयता म्हणून, आनी तेजे नंतर ते वचून दिल्ली जॉईन जाल्ले. आनी तेजे नंतर आमकां थंय रिकवर करपाक खूब टायम लागलो. त्या बाय इलेक्शनाक आमी म्हादेव नायकाक तिकेट दिल्ली, पूण थंय आमकां जाय तशी थंय फायट जाली ना. आनी तेजे नंतरच्या इलेक्शनाक आमकां जाय तसो कॅन्डिडेट थंय मेळना. तेज्या कारणान आमचो जो उठाव जो आशिल्लो आनी जो आमचे ट्रेडिशनल वोटर्स जे आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघात तांकां आमकां कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी शकले ना. म्हाका खात्री आसा बाब आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेजे आदले ब्लॉक प्रेसिडेंट थंय आसा हेमंत बाब आसात आनी असंख्य किनळेकर जावं बाकीचे सगळे असंख्य आमचे पार्टीचे लिडर्स थंय आसात. ते सगळे बाब शिवप्रसाद आनीकूय लोक आमकां थंय जॉईन जावपाचे आसा. ते सगळे जर एकठांय आयले जाल्यार आमकां खात्री आसा परतो शिरोडा मतदारसंघ हो परतो काँग्रेसचो झेंडो ह्या फावटी लागतलो हाची आमकां
खात्री आसा. ह्या वेळार हांव शिवप्रसाद आनी तांचे असंख्य वांगडी आयज जे काँग्रेस हावसान तो म्हणटालो कितें आमी 100च आपण आमी जागो ना म्हणून पळयत जाल्यार आयज 150-200 सुमार लोक आसात. सो शिवप्रसादाक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता. आनीक ह्या मतदारसंघात ती परत इश्यूज घेवन हाऊस टू हाऊस विजीट जर तुवें स्टार्ट केली आनी आमचे जे नवीन आमी विचार घेवन आयिल्ले आसा लोकां मुखार गोंय सांबाळपाक ते विचार थंय मुखार व्हरचे. सद्याक सरकार धडपडटा, तेजे 6 म्हयने एक्सपायरी जावपाक उरल्यात. आमी सांगता की सरकाराच्यांनी तो खंयच्या डायरेक्शनान वचप तर सगळ्यांक कन्फ्युजन जाल्लें आसा तांकां अशें दिसता. ह्या सरकारान जशें आमी परत परत सांगतात की गोंय विकपाक काडलेलें आसा, गोवा फॉर सेल, आनी जोडी नंबर 1 हे दोगूय सामके प्रामुख्यान मुखार उबे राविल्ले आसात गोंय विकपाक. आमी पयलीं कारापुराक मये मतदारसंघात बहुजन समाजाक अजुनूय ते रस्त्यार हाडून बसून तांकां आपल्या जमनीचो अधिकाराक फायट करपाक तांकां लायता. आनी हें आसतना गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो विश्वजीत राणी हांकां त्या लोकांचें कांयच पडून गेल्लें नाशिल्लें. आनी हो सादो इशू थंय गांवकार येवन बसल्यात, त्या गांवकारांक न्याय दिवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आमचो विश्वजीत राणे हे दोगूय अपयशी ठरल्यात. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री अपयशी ठरता आपल्या गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक, तांकां त्या खुर्चेर बसपाचो तांकां अधिकार ना. आयज तेणी गोंयची जमीन सगळे भायले जे लोक आसात तांकां आयज होलसेलान विकपाची तयारी हेणी केल्ली आसा. आनी काँग्रेस पक्षान आमी ठरयलां, आमच्या एलओपीन अनाउन्सूय केलां की गोंय 6 म्हयन्यांनी गोंयांत गोंयकारांचो सरकार येतलो. आनी गोंयकारांचो सरकार येतलो तेन्ना आमी पयली आमची जी सायन आसतली ती आमचें गोंय सांबाळपाक, आमची गोंयची जमीन सांबाळपाक जी सेक्शनां तेणी इन्कॉर्पोरेट केल्यात ती सेक्शनां आमी ड्रॉप करून सगळीं तुमकां जाय तसो पेंट मारपाक मेळपाना. एक बरो रिजनल प्लॅन गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक कन्सल्ट करून, गोंयकारांक कन्सल्ट करून जो रिजनल प्लॅन पयलीं चलताले आनी तेजेर प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जातालें गोंयचें, त्याच प्रमाणे एक बरो रिजनल प्लॅन हेजे मुखार गोंयांक आमी हाडटले, गोंयच्या सगळ्या घटकांक विश्वासान घेवन. आनी हेजी अनाउन्समेंट जे सेक्शन करून कन्वर्जन चालू आसा त्या कन्वर्जनाची सगळी सेक्शनां फर्स्ट कॅबिनेटींक जी डिसिजन जातली ती ह्या डिसिजनाचेर आमी सगळे ठाम आसा. आनी हे लोकांक आमी आश्वासन दिलां आनी आमची आश्वासनां केन्नाच बेश्टी नासतात. हो जो सरकार चल्ला तो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी जो कमिशन मॅनेजमेंट करता. म्हणजे गेल्या 5 वर्सांक ह्या सरकारान जवळ 800 कोटी रुपयाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून तेजेर कमिशन लुटलेले आसा. म्हणजे 800 कोटी हो ल्हान अमाउंट न्ही. आनी साद्या गोष्टीक जे जंय 5 लाखांनी काम जाता त्या 5 लाखाच्या कामाक 1 कोटी रुपया हे खर्च करतात, 2 कोटी रुपया हे खर्च करतात. अशें करून हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लो आसा. कसलोय येता इव्हेंट आनी इव्हेंटाचे जर बजेट तुम्ही पळयलें जाल्यार सर्रास हेणी गोंयकारांचे जो पयसो आसा हो पयसो खायत ते गेल्ले आसा. सो त्या खातीर वेळ येयल्लो आसा. ह्या सरकारची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक जाय तसलो गोंयकारांचो सरकार सत्तेर येतलो, हातूंत लोकांक कोणाकूच दुबाव ना. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांक जी उलो मारलेलो आसा सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय आनी सगळे एकठांय येवन आमकां ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करपाक जाय. ती म्हाका दिसता युनिटी जावपाक लागलेली आसा. सगळ्यांनी ती सुरवातूय केल्ली आसा. आनीक वेगळे पक्षूय एकठांय येवपाक सोदतात, वेगळे आमचे लोक जे पयस गेल्ले आसात तेय एकठांय येवपाक सोदतात. आनी स्ट्रॉंग जे मतदारसंघाचे लिडर आसात ते काँग्रेस पक्षान जॉईन जातात. जशें युरी बाबान आज सांगलां की सांजच्या आयज कुठ्ठाळी मतदारसंघात जवळ 1000-1500 कार्यकर्त्यांक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक आसा. सो ह्या वेळार परत एकदा आमचे शिवप्रसाद बाब हांकां आनी ताचे सगळे वांगड्यांक आमी आयज काँग्रेस पक्षान खूब खुशालीन तुमकां आमी काँग्रेस पक्षान घेतात. आनी आमी सगळे एक फॅमिली कशी फायट करुया आनी परतो काँग्रेसचो झेंडो
आमच्या शिरोड्या मतदारसंघाला व्हाव्या. थँक्यू. एआयसीसीचे प्रभारी श्री माणिकरावजी ठाकरे. हांव विनंती करता आमचे एआयसीसीचे को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर हाणें आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. Today it is a big celebration for the Congress Party once again, as a young dynamic leader and face of Shiroda, Shri Shivrprasad Vasant Shirodkarji has joined the Congress family, and for his joining on the dais we have our in charge Shri Manikrao Thakreji, PCC President Shri Girish Chodankarji, LOP Shri Yuri Alimoji, the senior working president Shri Sheikh Ji, all the block district presidents Mangaldas Ji, Rajesh Ji, Shashank Ji, the block president of Shiroda, and our young dynamic youth Congress president Archit Ji, all the leaders present on the dais, and to the press media. Thank you for covering this event for us. As a young face, not Gen Z, but towards Gen Z we can say, who is planning to leave all his aspirations and dedication towards his father's party, Congress party. Till date he was not outside working for the Congress party, but he belongs to the Congress family, and I'm happy that your whole family, your mother, your wife, your children are also here to support you to the decision what you have taken, and we all in the Congress family wholeheartedly would like to welcome you to the Congress family, as your father has been a dedicated Congress worker for ages to come. I hope you also make him feel more proud by working more harder and giving Shiroda Assembly constituency to our Congress party. In 2027 we'll have a MLA from there, and I'm happy that the strength of the workers which have come here to support his cause. The block president himself mentioned that now with him entering, the Shivrprasad ji entering, the force has become double, and with this double force we will surely ensure the defeat of double engine Sarkar in Shiroda. Thank you, and most welcome Shivrprasad. एआयसीसी इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी विनंती करता की ताणें सगळ्यांक आमकां संबोधीत करचें. शिवप्रसाद शिरोडकर जी, इनका स्वागत करने के लिए, उनके प्रवेश देने के लिए उपस्थित प्रदेश के हमारे अध्यक्ष गिरीश चोडनकर जी, सीएफ लीडर यूरी अलीमाव जी, हमारे को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निंबाळकर जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट शेख साहब, और जो हमारे चारों भी जिला अध्यक्ष राजेश जी, नागरिकर जी, मंगलनाथ जी, तीनों हमारे अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप जी, और सभी उपस्थित नेतागण की उपस्थिति में आज शिवप्रसाद जी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हो रहा है. तो जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने जो कहा था कि जो कांग्रेसी है, कांग्रेस की विचारधारा वाले जो भी कार्यकर्ता नेता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मजबूती देने के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूती लाने के लिए सब साथ में आना चाहिए. उससे के आधार पे बहुत सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस में आ रहे हैं. तो उसी का एक शिवप्रसाद के माध्यम से एक आप देख रहे हैं
ये अच्छा होनहार एक मजबूत नेता, क्योंकि पिताजी भी पहले कांग्रेस में उन्हीं विचारधाराओं के आधार पे काम करते थे। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो प्रवेश आज किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका प्रवेश देने के बाद उनको कांग्रेस में जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी तरीके से वो काम करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास जो है। मीडिया के बाहर समझते जो भी आज पूरी परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं कि पूरे गोवा प्रदेश में जिस तरीके से ये सरकार, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये जनता चाहती है कि ये भ्रष्टाचार सरकार होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको हटाया जाए। ये जनता की मांग है, जनता की आवाज है, हर जगह से जनता की आवाज आती है कि इस तरीके से गवर्नमेंट गोवा में नहीं चलेगी, जिनको गोवा के समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आज हर बात के ऊपर ये कहते हैं कि हम जो जनता मांगेगी वो देंगे। कुछ तो मंत्री ये कहते हैं कि चुनाव है इसलिए हमको इस तरीके से लुभावने कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेकिन बाद में हम हमारी तरफ से गवर्नमेंट चलाएंगे, ये बोलने में भी उनको हिचकिचाहट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जनता की सरकार नहीं है। जनता यहाँ की जो जमीन है वो बिकने के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं। जो यहाँ की जनता चाहती है, गोवा की जनता चाहती है कि जो भी एसेट है यहाँ के, वो जनता के काम में आए, जनता के हित में सब तरफ से काम हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि जितना भी लूटने का है गोवा को, उनको लगातार लूटने का काम ये सरकार कर रही है। ये किसी पॉलिटिकली पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आज जनता करे, कहीं भी जाके आप बात करो जनता से, वो उनके इससे एक ही शब्द निकलता है कि इन सरकार ये जनता गोवा हमारे की नहीं है। ये जनता की सरकार नहीं है। ये परिवर्तन होना चाहिए, ये जो भाषा वो करते हैं। तो हम यही चाहते हैं, अब जनता से उम्मीद करते हैं कि एक साथ होकर, हमने कई बार कहा है, पीसीसी हमारे प्रेसिडेंट ने, सीएलपी ने बार बार कहा है, हम सबको बीजेपी के खिलाफ साथ में लड़ना चाहते हैं, एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हमको बीजेपी को बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, जनता के हित में काम करना है। यहाँ पे जो भी डिफेक्टर है, जो भी जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनको कभी कांग्रेस पार्टी अपने इसमें नहीं लेगी, कितना भी नुकसान हो कांग्रेस पार्टी का। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए लोगों में कि भी कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को नजदीक नहीं करती है, मजबूती के साथ लड़ना चाहते। जनता चाहती है कि ऐसे विचारों के साथ हमने नहीं जाना चाहिए। जो कुछ हुआ पिछले वक्त, आप सभी को पता है कि वहां कितने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जा जाके शपथ लिया, अगर लोगों को इस तरीके से विश्वास उन पे नहीं रहा है, भगवान को अगर इस तरीके से जो पूजने वाले अपने अपने धर्म को, उनकी वहां पे शपथ लेके जो बात उन्होंने की है, ये गोवा की जनता कभी भूलेंगी नहीं। ऐसे लोगों को कांग्रेस में कहीं यहाँ पे जगह नहीं मिलेंगी। एक मजबूती के साथ गोवा की जनता के विषय लेकर हम लड़ेंगे, गोवा की जनता के लिए लड़ेंगे। और इस वक्त किसी भी इसमें ये बीजेपी की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार बोलती है, धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ है सभी जानते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से लूट की, हजारों करोड़ रुपए लूटे गए वहां पे, वो भी अप्रैल के पहले कितने लूटे गए थे पता नहीं, उसके बाद का हजारों करोड़ का वहां पे रिकॉर्ड सामने आया है। तो इस तरीके से सरकार जो झूठ बोलने वाले को, भगवान से झूठ बोलने वाले को वहां पे अपने पक्ष में लेती है। जो अयोध्या जैसे कांड करने वाले विचारों के साथ जो सरकार जुड़ी हुई है, तो जनता ये नहीं चाहेगी कि ऐसे जनता को वहां पे सत्ता में बिठाना किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। तो एक साथ होकर हमको लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। तो जनता को हमारा यह है कि जो आप जिस तरीके से आपके खुशी के लिए, आपके उसके भविष्य के लिए जो करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जनता नहीं जाना चाहेंगी। कि हमें 100% पूरा जनता के ऊपर भरोसा है, जनता के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे।
थैंक यू। दोबारा मैं शिव प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ, उनके सभी कार्यकर्ताओं को कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हैं तो आपके पीछे मजबूती के साथ है। एक बड़ी बात है कि एक मजबूती कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके कांग्रेस के प्रवेश की बात आएंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमच्या पक्षान प्रवेश केले शिवप्रसाद शिरोडकर आणि आपले मनोगत व्यक्त करचे. पयलीं देवाक नमन करता, आमच्या शिरोड्याच्या लोकांकूय नमस्कार करता. आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी एंड गोवा डेस्क इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी, को इंचार्ज मॅडम डॉक्टर अंजली निंबाळकर जी, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे लाडके गिरीशभाई तोडणकर जी, आमचे डायनेमिक एलओपी, आय थिंक लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू बी लाईक हिम, सो युरी आलेमाव आय वेलकम यू. आमचे कुशावतीचे डिस्ट्रिक्टाचे राजेश वेरेकर, शेख सर आमचे सिनियर लीडर हू इज बीन गायडिंग फोर्स टू द एंटायर अँड वर्किंग प्रेसिडेंट. आमचे सगळे डिस्ट्रिक्ट मंगलदास, शशांक आणि येस समील वलवयकर साब्यो, स्नेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो. आय ऑल्सो लायक टू टेक एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रुनो कुतिनोज नेम ब्रुनो. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी पार्ट ऑफ काँग्रेस. आणि हांव आज सांगपाक सोदतां की वॉट इज द रिजन वाय माय देर शूड बी अ रिजन टू जॉइन काँग्रेस. येस, आय एम बॉर्न इन काँग्रेस लॉयल फॅमिली, पण देर इज अनदर रिजन आय एम जॉयनिंग काँग्रेस. 20 वर्सां आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगले, आता 20 वर्सां ती बीजेपी रूल करता. आय विल स्पेसिफिकली स्पीक ऑन शिरोडा. 20 वर्सां शिरोड्या बीजेपी रूल करता, बीजेपीचो आमदार आसा, पूण शिरोड्या बीजेपीन लक्षच दिवना. आमचे लोक हे आयल्यात पळय आज हांगा, 4च गोश्ट्यो, रस्तो, उदक, हॉस्पिटल बरें आनी तरणाट्याक जॉब, पूण हे 4 गोश्टी जायनात. झिरो support. So I thought I will go with vision of our opposition leader Rahul Gandhi ji, and I said I'll follow HAND. What does HAND show? HAND is, आवाज of तरणाटे, आवाज of शेतकार आणि आवाज of गरीब लोकांचो. So हे विजन घेऊन म्हाका लोकांची सेवा करपा जाय. आणि आज इंडक्शनाचो असो दीस न्ही, ही शिरोड्याक नवी सुरवात. आय एम ग्लॅड. एक आम्ही 2 दीस पयलीं डिसायड केले आणि आमचे इतले लोक आयले. सो हांवें अजून पर्यंत राजनान सांगला तशें फ्री टँकर सर्वीस दिल्या बेतोडा टू बोरी शिरोड्या पर्यंत, एम्ब्युलन्स दिल्या, कारवार टू पेडणे पर्यंत गेल्या एम्ब्युलन्स. आणि आमी अशें खूब कामां करताले. आमी सगळे एक जावन ब्लॉक आमचो एक्स ब्लॉक लोक जे आसात आणि प्रेझेंट लोक आसात पळय सगळे एक करून आम्ही सगळे वी विल एन्श्योर सर 2027 शिरोडा इज काँग्रेस अँड काँग्रेस विल विन इन शिरोडा. ओके, आय एम रियली थँकफूल टू आमचे शिरोडेचे लोकांनी भुरग्यांक स्कुलाक आसता. इट वॉज अ वर्किंग डे टुडे, स्टील यू ऑल हॅव मेड इट ऑन वन मेसेज. सर, आय वॉन्ट टू टेल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर शिरोडा फॅमिली, शिरोडकार्स, दैट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. पिक्चर अभी बाकी है. थैंक यू वेरी मच. हम तुम्हारे साथ हैं. शिव प्रसाद शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं. शिव प्रसाद शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं. आता शिरोडेचे अनेक नेते श्री हेमंत सावंत हे सगळ्यांचे आभार मानतात. खंयचो प्रोग्राम जालो किंवा खंयचो कार्यक्रम जालो की ताका अंतिम टप्पो म्हणजे आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थँक्स. I also want to, I missed out one name. I want to. ना हांव अनेक आमचो डायनेमिक मॅडमीन म्हणिल्लो झेनझी हू इज अ फेस ऑफ गोवा टुडे and who has done lot of things in last 2-3 months. Action अशी केल्या. See, everybody also wants to follow him, and that is Archit Naik. I wish him all success for future, and he's been very dynamic guy. खंयचो प्रोग्राम जालो की ना त्या प्रोग्रामाचो अंतिम टप्पो म्हणजे वोट ऑफ थँक्स किंवा आभार प्रदर्शन करपाचे सगळे जे अतिथी लोक आयल्या दिसता.
मैं खास करके निम्बाड़कर जी आपका और ठाकरे जी का खास तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने दूर से आप इधर गोवा में आए और हमारे प्रसाद जी के इंडक्शन के इस शुभ मौके पर आणि त्याबरोबर आमचे LOP युरी सर, त्याचप्रमाणे गिरी सर, त्याचप्रमाणे NK सर, त्याचप्रमाणे आमचे वेरेकर सर यांका आणि त्याचप्रमाणे आमचे सगळ्यांची नाव ह्या ऑलरेडी ओळख झाली आसा सगळ्यांची. पण आज जे इंडक्शन जाला हे जवळजवळ 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं पासून आमकां वेल कनेक्टेड आशिल्ले शिरोडकर, वेल कनेक्टेड आशिल्ले. पण ताचे जेन्ना पयर तांचो फोन आयलो की आज आपलें इंडक्शन खरेंच बरें दिसलें आनी आमी आसा तितली कामां आमचे कडेन काडून आज आमी तुमच्या इंडक्शनाक म्हणजे आमच्या इंडक्शनाक आयिल्ले आसा ताका. आणि शिरोड्या मतदारसंघात ह्या खेपे 2027 काँग्रेस परत आपलो फ्लॅग फडकयतली हातून इल्लोय दुबाव ना. तितले आमची काँग्रेसची जी बोट आसा ती बुडोवन तो गेलो कोण तेजें नांव सुद्दां घेना आमी, पण ही बोट आसा ती परत आमी सारवार करतले आनी परत आमची काँग्रेस तो झेंडो आमी शिरोड्याक परत उबो करतले. सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. त्याचप्रमाणे आमची मिडिया, त्याचप्रमाणे पेपर मिडिया किंवा ही सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि त्याचप्रमाणे शिरोडा मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते आणि सपोर्टर्स ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ले बद्दल सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. देव बरें. माणिकराव जी, एक सवाल है. हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपने सोशल मीडिया से मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस का कि एक प्रेसिडेंट और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट आपको लग रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. इस बात से बहुत मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा शेयर भी हो रहा है. देखिए, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी मानती है. सभी वर्ग के सभी के लोगों को साथ में लेके चलने का विश्वास कांग्रेस पार्टी रखती है. बीजेपी किसी पर भी विश्वास नहीं रखती है और इस तरीके से बातें फैलाना उनके तो जिन में है. इस तरीके से बातें वो करते हैं कि उनको ना संसदीय प्रणाली पे विश्वास है, न यहाँ पे जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी पर विश्वास है, ना कई सब धर्म को साथ में ले चलने वाले पे विश्वास है. उनका विश्वास तो सिर्फ उन्हीं के इस पर है कि हमारी जो विचारधारा है उसको ही आगे हम लेके जाएंगे, किसी को साथ में नहीं लेके. ये उनकी विचारधारा है. गिरीश बाबा, मनीषा उसगांवकरान एक स्टेटमेंट केला की तुम्ही तांचेकडे 10 लाख मागले, एक सर्वे दाखयलो कित्याक, आणि तो सर्वे वाडोवपा खातीर तुम्ही 10 लाख मागले तांचेकडे. इलेक्शनाक आनीक 140 दीस उरल्यात. 140 दिसांक म्हणजे जवळजवळ 200 तरी एलिगेशन आनी न्यूज जातली. तुमची तयारी तर आसा. हांव प्रत्येक एलिगेशनाक उत्तर दितां. हांव जे एलिगेशन जातकच तुमचे पासून खंयच पयस वचपाना, तुमकां सोदपाकूय पडपाना. फक्त तुमचें काम आसपाक जाय कितें घेवपाक. हांव कोणाकूच पिसू म्हणपाना. जे खंय पत्रकारान जर म्हाका विचारले प्रश्न अशे एलिगेशनाचेर, हांव तुका पिशें लागलें रे म्हणपाना. जो एलिगेशन करता मनीषा तेकाय हांव मेंटल म्हणपाना जावं आनी कितें म्हणपाना. तेकाय कांय वायट. कारण डेमोक्रेसीन जे एलिगेशन जाता तेका फेस करपाक प्रत्येक लिडराक मुखार येवपाक जाय. तें काम हांव आयज ताट मानान करता. गेल्या 30 मेक साकून बीजेपी गोंयांत काँग्रेस दिसपाक लागली. जी सोशल मिडिया, त्यांचो IT सेल, त्यांची फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, तांकां काँग्रेस आनी गिरीश चोडणकर आनी आमचे लिडर सोडल्यार कांय दिसना. आयज सुद्दां प्रश्न आमचे एक वर्किंग प्रेसिडेंट केल्यार सुद्दां तांकां रिएक्शन दिवपाक पडटा. त्यांची फेसबुक पेज इज कम्प्लिटली डेडिकेटेड टू काँग्रेस पार्टी. ते पळोवन आमकां आनी स्ट्रेंथ मेळटा की आमकां एक सर्टिफिकेट दिल्या भशेन जाता की बीजेपीन आमचेर जितलो ते हल्लो करतात, अटॅक करतात, तितलो आमकां आनी कॉन्फिडन्स येता. काम करता तें सारकें चलना अशें दिसता. म्हाका खंयचेच बाय मनीषा जावं आनी कोणचे बाय जावं बाप जे आमचेर बीजेपीचेर आमी जो हल्लो चालू केल्लो आसा तांकां एक्सपोज करपाचो
त्याचे पासून कोणूच डिस्ट्रॅक्ट करपाक शकना. आमची फायट मनीषा बाय जावं आनी कोण आसा तेंचे कडेन नाच. आमची फायट ही बीजेपीक कंप्लिटली आमी एक्सपोज करतले. एक्सपायरी त्यांचो पिरियड जायसर त्यांचे एक एक साल काडीत रावतले आमी आनी एक एक जे हे आसा ते एक्सपोज करीत रावतले. हांव मिडियाक थँक्यू म्हणटा कारण आमी 15 वर्सां ऑपोजिशन आसा. खंयच्याय स्टेटीक इतली मिडियाचे अटेन्शन ऑपोजिशन पार्टीचे 15 वर्सां आसा तांकां मेळपाना. आयज आमचो इन्चार्ज येयलो तो खंय भोंवता तेजेर सुद्दां आमकां अटेन्शन मेळटा. आमचेर कोण रिजायन जाले तेणी सुद्दां स्टेटमेंट केल्यार ताका मिडियाचेर तितलें अटेन्शन मेळटा. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द मिडिया. इतलें मिडियाचें अटेन्शन आमकां मेळपाक लागलां हालीं. एकदम पळोवपाक बरें दिसता. मनीषा बायचेर येता आसतना जे ताणें एलिगेशन केलें की 10 लाख काय 15 10 लाख कितें म्हणलें ताणें सर्वे तुम्ही सर्वे दाखयलो खंय आणि तो जर वाडोवपाक जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटले. पयलीं म्हणजे खंयची फोट उलोवचे पयलीं जावं एलिगेशन करचे पयलीं ताजेर अभ्यास करपाक पडटा. हें एक्चुअली बीजेपी शास्त्र खूब बरें जाणा. जर अभ्यास करता आसतना जर उलोवपाक गेलें एक्सपोज जाता. गेले इलेक्शनाक आमी 28 सर्वे केल्ले आनी चडश्यो A क्लास आनी B क्लास सीट्स. वाळपय मतदारसंघ हो आमचो C क्लास सीट आशिल्लो आनी तो आमच्या सर्वेक खंयच नाशिल्लो. सो सर्वे कोणा दाखोवपाचो जावं सर्वे खातीर पयशे वचपाचे हे एलिगेशन थंयच फ्लॅट जाता. नंबर 2 मनीषा बायक म्हाजे कडेन सजेस्ट केले एक पुलीस ऑफिसर जो सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस. तेन्नाय सुपरिटेंडंट पुलीस आशिल्लो तो आनी आयजूय सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा. आनी तेन्ना धाडटा आसतना ताणें म्हाका एक सांगलेलें की मनीषा बाय कडेन पयशे ना. ते बरे फायटर ताका तुमी मातशे प्रमोट करात वाळपय आनी ताका तुमी पयशे दिवपा पडटले. फायनान्शियली तेजे कडेन जावचें ना. आतां तेणें जर फिगर 10 लाखांची जाग्यार तेणें 50,000 1 लाख म्हणलेलें जाल्यार तितून मातशें तथ्य दिसपा लागलें लोकांक. सो त्या हेजेर 10 लाखांचे फिगर मातशें व्हडलें जाता त्या हेतून. आनीक तिसरें म्हणजे मनीषा बायची ड्युटी मनीषा बाय करुनी म्हाजेर अटॅक करपाची जावं काँग्रेसीचेर अटॅक करपाची. आमी कांयच म्हणचे ना. आमचें सगळ्यांचें काम बीजेपीक एक्सपोज करपाचें आनी गोंयांत लोकांचो सरकार हाडपाची. कोणेंय कितलेंय आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाचें ट्राय केलें आमी कशेंच वचचे. ओके वसंत बाब, 6 महिन्यांनी इलेक्शन्स आसा. शिवप्रसाद, so looking at these elections, given a ticket, would you be interested to contest with it? Giving a ticket is the choice of Congress party. But yes, if given a chance, definitely. And what happened? अजून की तुमच्या जॉईन जावपाचें आसा ह्या दिसांनी अशें आयकलां अभय प्रभू. सो आयज शिवप्रसाद येयला जाल्यार फुडार तो येतलो कितें? I have said earlier that Congress party is gaining all over the state. Everyone is welcome in the party. However, the allocation of the ticket, there is a separate process with the president and coordination with the ICC. Today, we have to work together as one Goenka versus BJP. That is the hetu. And आज जे pod join जाता है, I believe the party president will clarify that. No one is promised a ticket. They are voluntarily joining the party to defeat the BJP. तुम्ही सगळे जॉईन जातात पण इलेक्शन लागीं येता तेन्नाच कितें सगळे जॉईन जातात? Now, so it is normal that elections are 6 months away. We want to strengthen everywhere, all the 40 constituencies. And in all 40 constituencies, not only one place, everywhere all over Goa you will see in the coming days that people are joining. And people are joining because they have realized that this Bhrasht Jumla party needs to be sent home as early as possible. One, I would like to answer him. हांव लास्ट 1 वर्साच्यान ट्राय करता काँग्रेस जॉईन जावपाक. आज म्हणून शुभ मुहूर्त आयला. तो कोण हाडायलो तुका जॉईन ना जावपाक? हाडावंक नाशिल्लो. इट वॉज गोइंग ऑन. दे टोल्ड मी हे समज लागले तुका आयज फाल्यां न्ही? ना हांवें काम चालू केलें. हांवें खूब काम केलें. हांवें दाखयलें हांवें कितें तेन्ना हांव काम स्टार्ट केल्लें हांवें. आतां काम फूल स्विंगान चालू आसा. एंड दॅट्स हाव आज म्हजो मुहूर्त आयलो. आज तुजें नशीब उजळलें. इलेक्शन लागीं मुद्दे. ना तशें कांय ना. Maniknathji, on
the day you had your committee meeting in one of the five-star hotel in Donapal, there is a faction of people who had come to meet you. They were unhappy with the things that are going on in Congress. What did you speak to them, and what is the solution that has come out of that? देखिए, कोई फैक्शन जैसी कोई बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। कोई नेता अगर कांग्रेस पार्टी का आता है तो सबको मिलना चाहिए। जो नाराज है वो भी मिलना चाहिए, क्या वजह से नाराज है वो भी हाईकमान की समझ में आना चाहिए। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी फैक्शन, कोई कांग्रेस पार्टी में फैक्शन नहीं है। सभी साथ में है, मजबूती के साथ साथ में है। जिनके ऊपर कार्रवाई की थी ये पता है आपको, वो सब डिक्लेयर करके की थी। उसके बारे में हम से आगे क्या प्रोसेस करेंगे उनके ऊपर वो प्रोसेस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो है वो पूरी तरह मजबूती के साथ है। कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी बाजू में नहीं जाएगा। एक मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और उनका भी कहना यही कि हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे। कुछ बातें रहती है, जब नेतृत्व आता है तो उसके बाद बताना पड़ता है। पर तो क्या ये नाराजगी थी? डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। ऐसा नहीं कि किसी को पूछा किसी को नहीं पूछा, उनको छोड़ दिया, उनका सुना ही नहीं। इसलिए जो लोगों में गलत फैलाने की कोशिश होती है बीजेपी की तरफ से, वो ना हो। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, एकजुट है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर क्या नाराजगी थी वो, और क्या आपने उनको क्या बताया उनको? देखिए, ये कोई इंटरनल जहाँ हमारी चर्चा होती है तो हमारी चर्चा है, लेकिन आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ कोई भी नाराजगी सब साथ में है, मजबूती के साथ काम करते हुए आपको दिखेगा। Shivrasad, Bhandari Khattar plays an important role in your constituency. When you talk about Subhash Shivachar and Mark, कास्ट वाइज पसार no, है। I'm just, हम सबकी पार्टी है यार, ये कांग्रेस पार्टी है। पहले I'm not asking. आपको शायद पता होगा, आप कांग्रेस आपको पार्टी भी के- पता होगा उधर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी जो तैयार हुई है, सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाली ही विचारधारा बोले तो कांग्रेस पार्टी है। मैंने कब बोला? नहीं बता रहा हूँ, ये जो एक कास्ट के बारे में पूछते थे, इसके बारे में मेरा एक था, उनको इसलिए नहीं वही करने दिया मैंने कि उसको क्यों फंसा रहे उस चीज है। इस तरह सभी लोग हमारे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधाराओं के आधार पे ही कांग्रेस पार्टी आज चल रही है। उन्होंने जब 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, नेहरू जी ने कहा मैं सब धर्मों को, सबको साथ में लेके चलूंगा। इस पर विश्वास जिनका है वो कांग्रेस को Sir, that's करे how या ना President करे। said he's ready to answer everything. Why couldn't you have- ये बात पंडित जी वही बात The बोले तो President can कांग्रेस answer पार्टी like आगे that. How चलेगी। nicely? Why can't he कोई answer? जात, कोई धर्म ऐसा I am विभाजन नहीं saying, I'm करती not कांग्रेस saying पार्टी। that. If the President can answer so nicely, why can't he? Thank you. Thank you. युनिफॉर्म 39 एच्या अपोज 17 जुलैला इनफ इज इनफ रिव्होल्यूशनचा मोर्चा कितें काँग्रेस सपोर्ट करतलो तेका TCP ऑफिसर 100% आम्ही स्टार्टिंगच्यान सांगलेले की हे सेक्शन जेन्ना येयल्ले त्या वेळार इंट्रोड्यूस जेन्ना हाऊसात येयल्ले त्या वेळार ओपोज करून आमकां वी वेंट इन द वेल टू ओपोज इट इन द असेंब्ली आउटसाइड वेन फेर्दीन बाब रिवेलो राहुल कुंकोळकार gave that bill to us. I was the first to present it in the house. We fought that a discussion should happen. So whatever call is being given, the party will support because this is destroying Goa against our environment. Thank you. Okay, thank Thank you. you. Thank you.